Hello everyone, welcome back to our channel. I'm DV EduHub. In the previous lecture, we discussed about Thomson's atomic model. Today we will be discussing Rutherford's atomic model. So without any further delay, let's get started. Till now we discussed about Thomson's atomic model. What Thomson proposed? He simply said that an atom is a sphere with positive charges all over it and the electrons are embedded in it. He didn't mention anything about the pattern, how these electrons are present, but he just proposed that the positive charges is spread all over it and the electrons that are negative charges are present like this. He also proposed that the mass of the atom is not concentrated at a particular place, it is instead spread all over it. But is this model properly correct? So this was the question that arose in the minds of many scientists. Many scientists, they came forward with their experimental observations and they put forward their explanations to describe an atom. One of the scientists was Rutherford, Ernest Rutherford. In 1911, he along with his students Hans Geiger and Ernest Rutherford took out the very famous alpha particle scattering experiment. This was the only experiment that overturned J.J. Thomson's plum pudding model of atom totally. What he did in the experiment? So you can see in the figure, this is the apparatus for Rutherford atomic model. Okay, now you might be thinking, what is this apparatus that is present in this figure? Well, let me explain you. This is the source which is enclosed in a lead box. This source is nothing but this is a source for alpha particles. Now, there is a hole through which these alpha particles can come out of this box and they can strike this gold foil. Okay. And around this gold foil there is a screen, and that is a fluorescent screen, which is the detector. Okay, so this is the setup for Rutherford scattering experiment. Now, what is the use of these alpha particles? Why he took gold foil, and what is the purpose of this fluorescent screen? Well, he took alpha particles because alpha particles have a heavier mass. Okay, so since alpha particles have heavier mass, they can strike the atoms in the gold foil and they can pass easily through these atoms, because Thomson stated that atom is composed of positive charge and electrons are present in it. The positive charge is not located at a point, it is spread all over. So since these alpha particles have heavier mass, they can easily strike these atoms and pass through this gold foil to strike this screen. Well, there will be a radiation that will produce in this fluorescent screen whenever these alpha particles will come out of this lead box and they will strike this fluorescent screen by passing through this gold foil. So that's why this screen has been named as detector. Now, why Rutherford chose gold foil? Why not any other foil? इसका reason ये था कि if we take a thin sheet of gold foil, like around 100 nanometer in width, so there is only 1000 atoms present in that. And according to Rutherford, less the number of atoms present in the sheet, more convenient would be his experiment. So he chose gold foil. Now, coming to the purpose of detector, I already told you that the path of the alpha particles which is coming out from this box and striking this gold foil will be only traced through this detector. There will be some radiation produced in this screen, which is a fluorescent screen, and through which we can detect the path of the alpha particles, like if they are getting deflected or no, or they are traveling through a straight path. This will be detected with the help of this screen. Now, according to J.J. Thomson, इस experiment में क्या होना चाहिए?
if the alpha particles come out of this lead box and they pass through this gold foil, they will strike the fluorescent screen through a straight line. They won't get deflected. हम थोड़ा सा डिफ्लेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट अ लार्ज डिफ्लेक्शन वोंट बी पॉसिबल अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. ये क्यों? क्योंकि जे थॉमसन ने क्लियरली मेंशन किया था कि जो एटम होता है उसमें जो मास होता है वो फुल स्प्रेडेड रहता है. द मास इज नॉट कंसंट्रेटेड एट एनी पार्ट, इवन द पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेडेड ऑल ओवर. सो इफ द अल्फा पार्टिकल्स हैव हाई एनर्जी एंड हाई मास, so they will just pass through it easily. They won't get deflected due to some repulsion. This is according to J.J. Thomson model of atom. But is the thing same happened in Rutherford model of atom? Rutherford scattering experiment में actually में क्या होता है? There's something happened which highly contradicted Thomson's model of atom. Because एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल्स इस बॉक्स से निकल के इस गोल्ड फॉइल को पास करते हैं तो उसमें से काफ़ी सारे तो स्ट्रेट पाथ फॉलो करके स्क्रीन को स्ट्राइक करते हैं. दे स्ट्राइक द स्क्रीन, बट सम ऑफ देम दे गेट डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स. बट मोस्ट एस्टोनिशिंग पार्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज दैट some alpha particles even bounce back from their path. You can see in this diagram, this is the path of the particles which bounce back. This travel along straight line and this get deflected. ऐसा क्यों होता है? According to Thomson model of atom, this particles should pass through straight line, and bouncing back is something which is in highly contradiction with his model. So Rutherford took out some observation and he stated the Rutherford model of atom. So there were 3 observations made by Rutherford. Rutherford ने 3 observations दिए according to his experiment. The first observation, what this tells, a major fraction of the alpha particles towards the gold shade pass through it without any deflection, and hence most of the space in an atom is empty. रदरफोर्ड ने बोला कि कई सारे पार्टिकल्स जो स्ट्रेट अवे पास हो गए थ्रू द गोल्ड शीट, ये सजेस्ट करता है कि जो एटम में, जैसे थॉमसन ने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड नहीं है. एटम की मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी. देयर इज नो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दैट इज स्प्रेडेड ऑल ओवर द एटम. दिस वॉज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मेड बाय रदरफोर्ड. द सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज दैट some of the alpha particles were deflected by the gold sheet, but by very small angles, and hence the positive charge in an atom is not uniformly distributed. Second point ये कहता है कि कुछ particles डिफ्लेक्ट हुए थे और वो इसीलिए डिफ्लेक्ट हुए थे क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्प्रेड नहीं है, वो एक जगह में कॉन्सेंट्रेटेड होकर रखा है. The positive charge in an atom is concentrated in a very small volume. This was the second observation given by Rutherford. The third observation was that since very few particles, बहुत कम particles, like 1 in 20,000 particles bounce back by 180 degree angle, it suggests that the volume occupied by the positive charged particle in an atom is very small compared to the volume of atom. ये कहता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो काफ़ी छोटे वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड होकर रखा है, वो फैला हुआ नहीं है, और उसका जो वॉल्यूम है वो एक एटम के कंपेयर में बहुत कम है. सो दीज वर द 3 ऑब्जर्वेशंस पुट फॉरवर्डेड बाय रदरफोर्ड, और इसी से हमें ये पता चलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को कंट्राडिक्ट करता है. नाउ द लास्ट थिंग फॉर दिस वीडियो इज द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट. रदरफोर्ड ने अपनी ऑब्जर्वेशन से अपना मॉडल प्रपोज किया और उस मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने 3 पॉइंट स्टेट किए. द फर्स्ट पॉइंट इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम एंड दिस रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियस. तो फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म न्यूक्लियस वॉज प्रपोज्ड एंड रदरफोर्ड ने काफ़ी अच्छी तरह से उसका एक्सप्लेनेशन देके कहा कि मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज एक स्मॉल वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड होकर रखे हैं,
और वहाँ पे पूरा एटम का मास भी लाइक J.J. थॉमसन बोल के मास तो स्प्रेडेड है बट not like the mass is spreaded. According to Rutherford, he stated that this region where the mass is concentrated and the positive charge is whole positive charge is concentrated is known as nucleus. So this was the first point of Rutherford atomic model. Now coming to the second point states that the negatively charged electrons surrounds the nucleus of an atom. उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी अच्छी तरह से जो थॉमसन ने प्रपोज नहीं किया था कि इलेक्ट्रॉन्स तो एम्बेडेड है बट दे शुड रिवॉल्व लाइक दे शुड हैव सम ऑर्बिट्स और दे शुड हैव सम पाथ वेयर दे आर प्रेजेंट. तो थॉमसन ने इसके बारे में तो कुछ नहीं बताया बट रदरफोर्ड ने काफ़ी अच्छी तरह से इसे कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट है एंड दे आर सराउंडिंग द न्यूक्लियस रिवॉल्विंग अराउंड इट विद अ हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ. उन्होंने एडिशनली ऐड करके कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ना कि सिर्फ प्रेजेंट है, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट विथ हाई स्पीड. एंड उन्होंने इस सर्कुलर पाथ्स को ऑर्बिट्स के नाम से कहा. एंड द थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूक्लियस बीइंग अ डेंसली कंसंट्रेटेड मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब लिमिटेशंस जब हमने पढ़ा था थॉमसन का तो इसके बारे में भी मैंने कहा था कि थॉमसन ने कोई भी एक फोर्स के बारे में बताया नहीं कि देयर मस्ट बी सम फोर्सेस व्हाई दिस पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज bind in between in the atom. So he doesn't mention anything about the force or any kind of attraction about between these electrons and protons. But रदरफोर्ड ने काफ़ी अच्छी तरह से इसे मेंशन किया कि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. सो दिस इज ऑल अबाउट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. Along with that, I would also like to request you all to kindly access the playlist. It would be more convenient for you all to go through the videos. Thanks for watching the video. If you have any queries, you can ask in the comment section below. Also, I have provided the lecture notes in the description box.